Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. How is it going on, guys? How's it going on? I believe all of you guys have been enjoying our past previous sessions for 9th standard. बहुत मजा आ रहा है 9th standard के लिए भी 10th standard के लिए हमने बहुत पहले स्टार्ट किया था 9th standard के लिए अभी recently स्टार्ट किया है. I'm very happy with the amazing response you guys give us for each and every video, be it for physics topic, be it for chemistry, biology, जो भी है mathematics, सबके लिए you guys have been providing us so damn much amount of support. Thank you so much for it. Thank you so much for it. I definitely feel honored and privileged to teach you guys as well. Thank you so much, guys. Thank you so much. So let's go forward and start about today's session, and also let me give you guys a small intro of myself also, if in case you don't know me. So guys, this series is a part of Umang series, which has been created especially for you guys to cover the entire syllabus of 9th standard for you guys for all these subjects. Okay? And what about me? My name is Abhishek. I'm the Master Teacher of Physics at Vedantu. I handle 8th grade, 9th grade, 10th grade and 11th grade JEE sessions for physics for regular as well as YouTube. So since my grades are very vast, I have been teaching thousands of students every single year and helping them to score 100% of marks regardless of which grade they are in. So my dear students, here I am today to actually tell you guys a very interesting fact that how can we actually cover gravitation just in 30 minutes. That's what we're going to do. I don't think we are going to take even 30 minutes. Today, I'm going to tell you the crux of this entire chapter so that even if you have not studied gravitation yet और कल आपका एग्जाम है तो आप तब भी gravitation में कुछ ना कुछ मार्क्स तो स्कोर कर ही लोगे. Bet? Okay, that's what we're going to do. We are going to just spend 15 minutes or 20 minutes of time here to nail this chapter up and understand the most important questions. And I'm also going to tell you कि कहां से सबसे ज्यादा marks आने वाले हैं in your examination for your midterms especially. Final exam में तो हम बहुत कुछ कर ही लेंगे उससे पहले. ठीक है? तो good job guys. So let's go forward and start today's session. I really wish that I would have been live there. I would have been able to talk to you guys and everything. But I'm really sorry it couldn't happen. But don't worry, the experience which you're gonna get after this session is not gonna go down. So let's go forward and start today's session. Okay? So if in case you have not liked the video yet, I'm pretty sure that before the video started, there would have been a lot of likes. Hit that like button, tehes mes kar do, smash it right now, and also share the video if you feel that this is going to be helpful for all the students out there. Help your friends as well, guys, and subscribe to the channel if you haven't yet, because every single day 9th standard sessions are coming out exactly at 8 o'clock for all the damn subjects out there. So get ready, guys. Subscribe to the channel, press that bell icon so that you receive the first notification for every single video coming out. ठीक है? तो अब और कुछ नहीं, आगे बढ़ना है सीधा टॉपिक के अंदर. बिफोर वी स्टार्ट, एज ऑलवेज विल बी गोइंग अहेड विद द वेरी ब्यूटीफुल कोड. आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइज टू रिलेट टू दिस कोड एंड ट्राई टू अचीव व्हाट इज ट्राइंग टू से. सिंपल. Rise above the storm and you will find the sunshine. Rise above, guys. The storm. This midterm examination is a very छोटू storm in your life. A very छोटू storm, isn't it? बड़े बड़े एग्जाम आना बाकी है यार, ये तो छोटा सा एग्जाम है, राइट? और बड़े बड़े चीजें आना बाकी है. एग्जाम्स क्या होती है, राइट? सो गाइस, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, नेवर डाउट योरसेल्फ एंड जस्ट किल इट. ठीक है? कूल. Okay, so how we gonna do this? We are going to understand the topic of gravitation with the help of a mind map. Now, what is this mind map? Very simple. It contains all the topics of this session, of this particular chapter, in just one single image here. That's the beauty of the mind map. You will be able to download this mind map, whatever I'm going to explain today, with the help of the PDF, and you can download it from the Vedantu's app. We'll tell you how to do that. But this is what we're going to study today. Each and every branch of this mind map, we're going to focus and we're going to kill it right now. Okay? So let's go forward and start with the first branch right now, which is the introduction to the chapter. तो इससे क्या होने वाला बच्चा आपको कि you are going to understand कि what is the crux of this chapter and from where the most important parts are going to come, so that even if exam is tomorrow, you can focus on that right now. ठीक है? कैसे? अब ध्यान से देखो. Gravitation का the chapter starts with the concept of what is gravitation. So in very simple terms, for a 1 mark question, what you're going to do? What is gravitation? Gravitation is nothing but the force that binds us to the earth. That is the force, isn't it? In a very simplest and the most layman terms, what is gravitation? That is the force with which we are binded to the earth. We are standing straight right now because gravitational force is pulling us down. The apple falls down. It fell on Newton's head again because of gravitational force,
right? It is the force with which we are standing on the earth. So most important and single straightforward definition. This is not the actual physical definition, lekin ye is enough to get few marks. Now this is done. Now the next question which comes in examination ki what are the applications of gravitational force? कहां इसकी जरूरत पड़ती है और कहां आपने महसूस किया है, फील किया है, देखा है कि gravitational force is helpful in your real life? What are those positions? Very simple, guys. Number one, obviously the definition itself. This is the force with which all the objects on earth are on earth. Otherwise they will be floating in space, isn't it? Absolutely yes. Number two, it causes the motion of the moon around the earth. It also causes the motion of the moon around the earth. इस वजह से मून भी घूमता है, इसी वजह से सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड भी घूमते हैं, इसी वजह से सारे प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सारे के सारे प्लैनेट्स revolves around the sun also. Every planet have their own moon, not every one of them, but few of them have their own moon, and every moon of those planets also revolve around those planets because of the gravitational force of that particular planet. ठीक है? So number one definition हो गया, and number two you understood the applications also, correct? These are the applications, and there is one more very interesting application, that is nothing but the tides. The tides, very important. This question can come in your examination right now. What is this? This is nothing but the tides on our earth are also caused due to the gravitational effect or gravitational force of the moon and the sun on earth. क्योंकि थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे कि gravitational force होता क्या है. We'll understand that in a bit in terms of mathematical equation, and you will also understand in the same manner कि if earth is applying a force onto everything else also applies force on earth. Absolutely true. And the force is absolutely equal to everything. अर्थ जितना फोर्स लगा रहा है मुझ पे, मैं भी उतना ही फोर्स लगा रहा हूं अर्थ पे. नाउ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड राइट नाउ कि सर ऐसा है तो जब अर्थ हमें नीचे खींचता है हम अर्थ को ऊपर क्यों नहीं खींचते हैं, राइट? दिस क्वेश्चन माइट बी कमिंग इन योर माइंड. लेट मी क्लियर दैट अप, एंड टू अंडरस्टैंड दैट लेट मी गो टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. What is universal law of gravitation? Very simple, guys. Mr. Isaac Newton said, very interesting stuff. One of the interesting stuff was, please focus here very carefully. एक जो बेहतरीन उन्होंने एक चीज बताई, मैं आपको बताता हूं क्या है. ठीक है? He said, if there are two objects, one a bigger object capital M and one a smaller object small m, capital M small m, या तो M1 M2 ले लो, आपकी मर्जी, completely fine. And they are at a distance of r. They are at a distance of r or d, whatever you want to take, it's completely on you. Mr. Newton says that the gravitational force between these two objects, is directly proportional to the masses, directly proportional to the multiplication or the product of these masses, and this gravitational force is inversely proportional to the distance, square of the distance between these two masses. That's what he said. That's what absolutely Isaac Newton said. That is universal law of gravitation, जो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है CBSE 9th में right now. ठीक है? So what is universal law of gravitation? Universal law of gravitation states that the gravitational force between any two objects, it's directly proportional to the product of the masses of the object and also inversely proportional to the square of the distance between these two objects. Simple. And when you combine this formula right now together, you will get what? You will get F is proportional to capital M small m by r square. Now I need an equation. I don't need proportionality here. मुझे प्रोपोर्शनैलिटी बाहर निकालना, मुझे इक्वेशन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल बाहर निकालूंगा and I'll put a constant there, and that constant will be called as proportionality constant, isn't it? We all know that. So this will be equal to what? This will be equal to F is equal to m by r square, and I'll put the proportionality constant which would be G. That is the proportionality constant. How did the proportionality constant come? I replace this proportional symbol to capital G and equal to symbol. Whenever I change this proportionality symbol to equal to symbol, I need to put a constant there, and I put it right there. What is this G now? Before that, this is the main and important formula which you should note it down right now, guys, because इसके ऊपर आपको numericals आएंगे. Note it down. इस पे आएंगे because I'll tell you why. Because this formula में जो भी terms हैं, for example masses and distances, ये सब पावर में होते हैं, into 10 power 12 into 10 power 3 something होता है. So this is kind of difficult for a 9th standard student to solve in a faster way. So
all of us make sure, all the teachers make sure that there is one question based on this, so that you guys invest some time there and you lose time and you might lose some marks, isn't it? तो पूरे ध्यान से रखना, you are more smarter now, so practice a lot of problems on this particular topic. ठीक है? F is equal to gmm by r square, very very important. Cool. तो ये हो गया आपका force. Now what is this g? This g I'm pretty sure कि all of you guys know this g is nothing but your gravitational. Yes, this is called as gravitational constant. What is the value? The formula is the name is universal gravitational constant. And what is the value of universal gravitational constant? It is 6.67 into 10 power minus 11. That is the value of your gravitational constant. 6.67 into 10 power minus 11. अगर पता नहीं था तो अभी नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अभी कभी there is one more question coming in कि what is the SI unit of gravitational constant? What is the SI unit of gravitational constant? There is sometimes this one mark question also comes in. How will you do that? You know the formula here. Do it. कैसे? G का formula लिखो यहाँ से. G would be what? G would be force into, ये force है, into r square divided by both the m's. From the same gravitational force formula, you write down this formula for G. And what will be the unit then? It's pretty simple. Force का unit क्या होता है? Force का unit होता है Newton. डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है. एम मास का यूनिट क्या होता है? केजी, तो 2 m है तो केजी स्क्वायर. दैट बिकम्स द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी. नोट इट डाउन राइट नाउ इफ यू डिड नॉट नो. कम ऑन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज 6.67 into 10 power minus 11. राइट नाउ नोट इट डाउन गाइस. ठीक है? So within this just one slide, I believe that you at least would have got questions from 1 mark to 2 mark to even 3 marks. ठीक है? So I hope all of you guys understood this. This is pretty easy. It's pretty easy, right? कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं. Let's move into something way more easier. Cool. Now since we got this particular thing, now we are up to the point where we have to understand कि this initial question which we started the session with, कि sir, अर्थ हमें खींचता है तो हम नीचे खड़े हैं. Why are we not pulling up the earth? Why are we not pulling up the earth? That's pretty interesting. I hope this question has run in everyone's mind and a lot of you guys might already know this answer. But anyways, let me just establish it clearly in every one of your mind. क्या होता है? यार, force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration. According to Newton, if there are two objects, according to Newton, if there are two objects with capital M and small m, both of them are going to pull each other with a gravitational force. And always remember guys कि gravitational force जो होता है, the gravitational force जो होता है, it's always a pulling force. Gravitational force cannot push any object. No, that is not possible. Gravitational force is always a pulling force. It's always an attractive force. वो attract करता है चीजों को, वो कभी push नहीं कर सकता. ठीक है? So that means these two objects cannot repel each other. Never in their real life they can repel each other. What they can do basically is कि they can pull each other together and they come closer. तो यानी कि ये कह रहा है कि न्यूटन ये कहता है the force of bigger m on small m is F. Gravitational force Fg. The force on small m on the capital M is also the same, Fg. So what Newton is trying to say is very simple. Gravitational force of both these objects on each other are absolutely same. There is no difference among them. It's absolutely same. ठीक है? दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं. ये हो गया. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस नो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, Fg लिखूं एंड इक्वल टू ma लिखूं. Gravitational force is constant between both the objects. So this is a constant value. Fg is a constant value. If Fg is constant, I can write down m is equal to 1 by a or Fg by a. From here you can understand very clearly how is mass and acceleration related. Mass and acceleration of an object is related by inversely related. That means more the mass of an object, less is the acceleration of the object because of the force. Less the mass of the object, more is the acceleration of the object because of the force. And this is the reason why, my dear students, Earth is not coming towards us. It might be coming, but since the mass of the Earth is so damn big, the acceleration of the Earth is very less. Inversely proportional, ना? हमारा mass बहुत कम है, इसलिए हमारा acceleration काफी ज्यादा है, and we are bounded towards because we are accelerating towards the Earth. Earth is also accelerating towards it, but that value is so damn negligible क्योंकि mass उसका काफी ज्यादा है. So I hope all of you guys got this particular point, and this is also a very important concept which you should all know after studying gravitation.
ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हो गया। अब क्या आ रहा है? हाँ, अब तो ये सिंपल सी बात है, अब तो ये बहुत काफी सिंपल सी बात है। So this gave us a very basic idea. This gave us a very basic idea that we are accelerating towards the earth. With what acceleration? What is the acceleration? I'm pretty sure all of you guys know that acceleration is called as acceleration due to gravity, right? Everyone knows that. What is it called as? Acceleration due to gravity, right? And what is the symbol of this? The symbol of that is g, and the value of that particular acceleration is a constant value, which is 9.8 meters per second square. Correct? 9.8 meters per second square is the value for your acceleration. Now, how did we get that value of acceleration g? वो भी एक शायद एक derivation जो शायद आपको आ सकती है, बता देता हूँ कैसे आया। So we very clearly understood that force is equal to mass into acceleration. फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आई राइट डाउन एफ जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेम फॉर्मूला, आई जस्ट रिप्लेस इट फॉर ग्रेविटेशन। What is the formula of Fg? The formula of Fg is gmm by r square. We just proved that right now. Gmm by r square, which is equal to mg. यहां से you can very easily see that m and small m cancels off. Small and small m cancel हो गया। अब क्या बचा? G is equal to capital Gm by r square. This, my dear students, becomes the formula of small g. That means आप acceleration due to gravity का जो value है किसी भी planet के लिए निकाल सकते हो। You can find out the value of small g, that is the acceleration due to gravity, for any planet in the entire universe, only if you know the distance between the earth and that planet and the mass of that planet. And this is how people know. That's the reason how we can send different rovers, different probes, different satellites to different planets, so that if in case we just let satellites go without this calculation, what happens is कि वो जाएगा दूसरे planet पे उतरने की कोशिश करेगा, क्या होगा? We are assuming that the gravity of that the object will be accelerating towards that planet would be 9.8 meter per second square, which is wrong. तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं वहां पे, तो क्या होगा? इट इज वहां पे शायद उसका एक्चुअल जी का जो वैल्यू होगा वहां पे शायद होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड वी वुड बी गोइंग एट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अज्यूमिंग दैट कि वहां पे भी 9.8, तो हम ज्यादा तेज जाएंगे, एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग बिफोर लैंडिंग वी विल बी crashing down. That's what have been happening. So it's very important to actually know what is the value of acceleration in different planets. Also a very important thing, guys, coming out from the basis of Chandrayaan 2 also. ठीक है, cool. तो ये हो गया gm by r square, ये फॉर्मूला है। This also brings us to a very important understanding, guys, कि g के फॉर्मूला में स्मॉल m नहीं है, स्मॉल m नहीं है g के फॉर्मूला में। That means doesn't matter if I am falling down, doesn't matter if an elephant is falling down, doesn't matter you are falling down, हम तीनों पे, for all the three of us, we all have the same value of g, 9.8. It does not matter what is the mass of the small object. What matters is what is the mass of the big object, which is the earth. It just matters on that. इसलिए it doesn't matter whatever satellite we send of whatever weight, it does not matter what is the value of g for that particular object. क्यों? क्योंकि जो भी वेट का भेजो सब पे g सेम ही होगा उस प्लैनेट का, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों g का वैल्यू। Now in the previous chapter, that is motion and the forces laws of motion, you studied few equations of motion, right? You studied few equations of motion which were v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. तो उस entire scenario में a के बदले g लिख देना, क्योंकि all these equations of motion were based on horizontal motion. Now when we are talking about gravitation, we obviously going to talk about vertical motion. तो vertical motion में few very key important points. If you have an object going upward, इस पे acceleration due to gravity कहां पे लगेगी? नीचे की तरफ। क्यों? Because earth is pulling the object down, so the acceleration of the object should also be downward, but the object is going upward because we threw it, right? So in case if the object is going upward and the acceleration due to gravity is downward, you will take the g value as negative. तो आप लोगे क्या? -9.8. Why? Because the motion of the object is upward, but the earth is pulling it downward with an acceleration due to gravity of g. You will take that g value as negative. So in that particular scenario, you will write down the formulas like this.
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बदले, a के बदले हमने क्या डाला माइनस जी, तो क्या आ गया v इज इक्वल टू माइनस जी टी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू और h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। नाउ इफ इन केस आपका ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे ही जा रहा है, इट्स कमिंग डाउन, इट्स फॉलिंग फ्रॉम डाउन, it's falling downward and you have the g also downward. Since motion of the object and g both are in the same direction, I'll take this as positive. So this is the common mistake which we all do guys. So I would like all of you guys to pay complete attention here. अगर ये positive है तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, ये पूरे सिनेरियो में आप क्या लिखोगे, v is equal to u plus gt. Instead of minus you'll write down plus. h will be equal to ut plus half gt square. Same formula. Final v square is equal to u square plus 2gh. Same formula, no difference at all. Same formula, no difference at all. ठीक है? This was it for the case of gravitation and the concept of equations of motion and the concept of small g. So if in case you didn't know about all this, I'm pretty sure कि ये जानने के बाद आपको बहुत सारे मार्क्स मिलने वाले हैं. So guys, congratulations, you all are doing really really great. We are just left with two more mind maps and the third mind map is this, the difference between mass and weight. One of the most important questions of this particular chapter. और बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर give us proper difference. Let me tell you the proper difference between mass and weight guys is pretty simple actually. बहुत ही simple है. ठीक है, तो मैं दिखा देता हूं आपको क्या डिफरेंस है यहाँ पे. Give me a moment. Yes, कलर चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ, अब आ गए हम. यार ये भी ग्रीन है, चलता है. ठीक है, अब ध्यान से देखो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्या होता है. फ्रॉम चाइल्डहुड वी हैव बीन स्टडीइंग व्हाट इज मास. व्हाट इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज माय मास. माय मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर यू सी इन मी, द अमाउंट ऑफ मैटर आई एम मेड अप ऑफ. करेक्ट, दैट इज माय मास. So if there are 20 kg of matter inside me, my mass will be 20 kgs. If there are 40 kg matter inside me, I'll be 40 kgs, right? So what is your mass? Your mass is the amount of matter inside you. So that is simple. So what is the definition? आप ये भी लिख सकते हो और जो मैंने बोला वो भी लिख सकते हो. What is mass? Mass is the amount of matter contained by an object or the amount of matter present in an object. That is your mass. Also, you can write down mass is the measure of inertia of an object. Inertia, I'm pretty sure you are understanding from the second chapter itself what is inertia. You can also say that the mass is the inertia of an object. That is mass. But what is weight? That is very interesting. What is weight? You already know. You might not know that that is called as weight. We already know that if you're standing on earth, if we are on earth, the earth is pulling us down with a gravitational force. The earth is pulling us down with the gravitational force. That gravitational force, guys, it is called as weight. Simple. Understood? I'll repeat this again. We all know that the earth is pulling us down with a gravitational force Fg. With the gravitational force Fg. That gravitational force itself is called as weight of an object. So if I have to define what is weight, weight would be nothing but weight is defined as the force with which earth pulls us. Weight. तो weight का फॉर्मूला क्या होगा? mg. यही ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हो गया. दैट इज वेट. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड. वेट का डायरेक्शन भी हमेशा कहां होगा? डाउनवर्ड. क्योंकि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो फोर्स नीचे है तो वेट भी नीचे की तरफ होगा. वेट इधर उधर नहीं होता, वेट हमेशा नीचे की तरफ होगा. ठीक है, सिंपल एज दैट. तो ये हो गया, डेफिनेशन हो गया दोनों का. करेक्ट, दोनों का डेफिनेशन हो गया. अब चलते हैं यूनिट की तरफ. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? द एसआई यूनिट ऑफ मास शुड बी इन केजीस. Correct, we measure our mass in kgs. I am 40 kgs, you are 50 kgs, you are 60 kgs, 70 kgs, right? We all know that. What is the SI unit of weight? Simple. Weight is gravitational force. It's a force. तो अगर weight force है तो उसका SI unit क्या हुआ? न्यूटन. Correct? बिल्कुल. Mass, अब mass पे आते हैं. Mass basically ऐसे समझे इसको, mass scalar quantity है. क्यों? Doesn't matter मैं ऐसे खड़ा हूं कि मैं ऐसे खड़ा हूं कि मैं ऐसे खड़ा हूं. Doesn't matter. My mass of the body is same. The amount of matter present in me is the same. लेकिन weight हमेशा नीचे की तरफ ऐड करता है. weight हमेशा नीचे की तरफ ऐड करता है. यानी कि weight का जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाइड है. weight का एक ही डायरेक्शन है. यानी कि weight के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है.
और ऊपर से वो फोर्स है, और हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज योर थर्ड डिफरेंस राइट देयर. तीसरा डिफरेंस गाइस, मैं आपको 5 मार्क्स का आंसर बता रहा हूं अभी. 3 मार्क्स तो हो गया, डेफिनेशन हो गया 1 मार्क का, एसआई यूनिट हो गया 2 मार्क का, स्केलर और वेक्टर हो गया 3 मार्क्स का. ठीक है, अब चलते हैं फाइनल थिंग की तरफ. नाउ जस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड समवन एल्स इज स्टैंडिंग ऑन मून, हम दोनों का मास कितना है? सेम है. क्यों सेम है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड मी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड मी इन मून. मैं मून तक जाऊंगा तो मेरा वेट लॉस थोड़ी हो जाएगा. नहीं हो सकता ना कि मतलब अचानक से 40 kg मास निकल के कहीं 40 kg का मैटर अभिषेक के अंदर से गायब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? सो द अमाउंट ऑफ मास इनसाइड मी एंड द अमाउंट ऑफ माय मास इनसाइड मी ऑन अर्थ एंड मून आर सेम. सो मास इज अ सेम वैल्यू, मास इज अ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स. कहीं भी चले जाओ दुनिया में आपका मास सेम रहेगा. ठीक है, कूल. अब आते हैं वेट की तरफ. वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला है आपका mg. वेट का फॉर्मूला है आपका mg. सिंपल सी बात, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. g का वैल्यू चेंज होता है जगह जगह पे. g का वैल्यू चेंज होता है डिफरेंट प्लैनेट्स पे, क्योंकि g का फॉर्मूला क्या था? g m/r². तो m और r की वजह से ये वैल्यू चेंज होती रहती है. करेक्ट, g की वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी चेंजिंग एट एवरी सिंगल पोजिशन. वेट is not going to be constant throughout the earth also, throughout the other planets also. Fourth difference guys, simple and straightforward. ठीक है, so I hope all of you guys have understood this particular part also कि major difference क्या है between mass and the weight. I'm really happy that all of you guys are understanding till now. Cool. अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस. और कुछ बचा है इसमें? और कुछ करने को तो है नहीं मेरे ख्याल से. हाँ, एक फाइनल थिंग है. तो जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एग्जामिनेशन फॉर CBSE 9 की, हम अर्थ में हैं और हमारा मास इतना है, तो मून में कितना मास होगा हमारा? ये एक सिंपल क्वेश्चन है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि एवरीवन नोज इट. इट्स वेरी सिंपल गाइस की वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ. ये नोट डाउन कर दो. ठीक है, ये बहुत सिंपल सा चीज है जो आपको याद होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ माय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg, अगर मैं 60 kg का हूं ऑन अर्थ, व्हाट विल बी माय वेट इन मास? इट वुड इन मून इट वुड बी 1/6 ऑफ 60 kg. सो दैट इज 10 kg. Oh, I really wish I would have been in moon. कितना हल्का होऊंगा मैं, अभी कितना भारी हूं मैं. Anyways, any mutual feelings guys? Do let me know on the comment section. And my dear students, if you guys have been enjoying the session till now, hit that like button and also share the video if you think this is superbly going well. ठीक है, तो कितना टाइम हो गया अब तक? मैं देख सकता हूं कि अभी तक हमने कुछ 15-20 मिनट कर लिए. बहुत बढ़िया. वी आर गोना गो फॉरवर्ड फॉर द फाइनल टॉपिक, जो बहुत ही सिंपल है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को उसमें सबसे ज्यादा मजा भी आता होगा. तो ग्रेविटेशन का पार्ट तो खत्म हो गया. ग्रेविटेशन के अंदर एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी बात आती है, जो है प्रेशर, थ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला पार्ट. तो इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं एंड दैट वुड बी द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं कि इस चीजों में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. देखो, ध्यान से देखो. सो वी हैव ग्रेविटेशन के अंदर आता है प्रेशर. अब प्रेशर क्या होता है? सिंपल, आपके पास 2 फॉर्मूला है इसके. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया. कोई भी फोर्स नहीं, थ्रस्ट मान लेते हैं. अब ये थ्रस्ट क्या होती है? ठीक है, सिंपल सी बात है. थ्रस्ट वो होती है, वो फोर्स होती है जो आप परपेंडिकुलर अप्लाई करते हो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर. फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है मेरा, इस स्क्रीन पे मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये थ्रस्ट नहीं होगी. इस स्क्रीन पे मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो थ्रस्ट नहीं होगी, इंक्लाइंड थ्रस्ट नहीं होगी. जब मैं सीधे अप्लाई करूंगा ये थ्रस्ट होगी. क्या होगी? ये थ्रस्ट होगी. क्यों? बिकॉज नाउ योर फोर्स इज परपेंडिकुलर. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट. उसको हम कहते हैं थ्रस्ट. सो व्हाट इज थ्रस्ट गाइस? थ्रस्ट इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर फोर्स. तो प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया और द परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया और द नॉर्मल फोर्स ऑन एन एरिया. वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. कोई भी चीज प्रेशर नहीं हो जाएगी, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होगी वो. ठीक है, याद रखना है इसको. हाँ, इसी वजह से प्रेशर की बहुत सारे एप्लीकेशंस है. जिससे क्यों है एप्लीकेशंस की? बहुत सिंपल सी बात है. प्रेशर का फॉर्मूला अगर हम लिखना फोर्स अपॉन एरिया ना, अगर ये हमने लिखा, वेरी सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. दिखता है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर बढ़ा सकता हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर बढ़ा सकता हूं अगर मैं उसका एरिया कम कर दूं. सिंपल सी बात, करेक्ट? तो अगर
मेरे पास चाकू है और चाकू का जो इफ आई हैव अ नाइफ, द वन ऑफ द एज ऑफ नाइफ इज वेरी शार्प. व्हाई? बिकॉज आई वांट मोर प्रेशर देयर, सो आई हैव reduced down the area. I need more pressure there, इसलिए I have reduced down the area. That's why it is sharp. So it's easy for me to cut the vegetables. But if the same, if the same knife is actually blunt वाला, अगर हम उसका जो blunt वाला साइड है, एज है, वहां से काटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कटेगा. क्यों? सेम प्रेशर लगाओ आप, नहीं कटेगा. क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एरिया ज्यादा है, तो प्रेशर कम है वहां पे. समझ में आया? Very simple. The same concept goes on for different applications. For example, you must have seen that the bike which we ride, your bicycle which we ride, has very small tires, but truck and the bus tires are very, very big. Even the car tires are kind of big sometimes. Why? Why is that? Why can't all of them have the same tires of the cycle or the bike? It's pretty simple, guys. क्योंकि अगर हम एक ट्रक उठाएंगे, ट्रक का वेट इतना ज्यादा होता है, ट्रक का वेट इतना ज्यादा होता है और उस छोटे से एरिया पे आती है. छोटे से एरिया, कौन सा एरिया? टायर का एरिया. अगर टायर मेरा पतला हुआ, इफ द टायर इज वेरी वेरी थिन, what happens is the pressure is more. If the area is less, the pressure is more. So the entire pressure on the tires might break the tires. या तो रोड को भी वो शायद क्रैक कर सकता है, इतना प्रेशर हो जाएगा. So what do? We make the tires of the trucks very big, ताकि जब वेट उस पर पड़े, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम हो जाए रोड पे और टायर्स पे. ठीक है? So that are few applications of the concept of pressure. Now let's move on to the next part. That is concept of fluid pressure. So it's not only that the solids apply pressure or the solids can apply pressure on other solids. It's also that the fluids also apply pressure. How can we prove that? It's very simple. अगर मैंने imagine करो कि एक ग्लास लिया, अगर मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने पानी भरी, ठीक है, I filled this glass with water. I make a small hole here. I'll make a small hole here. इससे क्या होगा? Guys, if I just ask you this question, let me know the chat right now. What will happen if I put a hole here? The water will come out. But how does the water come out? Does the water come out like this, dripping? Or the water comes out like shh? Kaise? Drip or shh? I'm expecting all of you guys to go shh in the chat right now. I'm pretty sure you already understood कि sir यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पानी ऐसे आएगा. क्यों आ रहा है? Why is it not dripping like this? Why is it coming out with a jet speed? That is because पानी जो है इस ग्लास के चेंबर्स पे प्रेशर लगा रहा था, कंटिन्यूसली लगा रहा था. तो जब अचानक से उसे होल दिखा, उस प्रेशर से वो बाहर आ गया. इफ इन केस द फ्लूइड वाज नॉट, द वाटर वाज नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन द ग्लास कंटेनर, कोई प्रेशर होता नहीं, तब वो ड्रिप करता, ऐसे बह जाता. लेकिन सिंस वहां पे प्रेशर है तो ऐसे निकला. सिंपल सी बात. दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट फ्लूइड्स अप्लाई प्रेशर. कूल? ओके. सो द फ्लूइड्स अप्लाई प्रेशर equal in all directions. The fluid supply pressure equal in all the directions. Very very important to understand. ठीक है? तो ये हो गया. उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज आई. वो इंटरेस्टिंग चीज ये थी, if I have the same glass container, or if I have anything which has water in it, if I have an object here, I try to push this object down. तो कोई भी ग्लास कंटेनर लेना गाइस, कुछ भी करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली. आपके पास बाथ टब है तो बहुत बढ़िया, बकेट ऑफ वाटर तो बहुत बहुत बढ़िया. एक काम करना, उस बकेट ऑफ वाटर में आप क्या करना, जो मग होता है जिस मग से आप नहाते हैं, उस मग को ढकेल के देखो अंदर. आई एम प्रीटी श्योर उस बकेट ऑफ वाटर में अगर फिल्ड विद वाटर है, अगर आप मग को ढकेलने की कोशिश करोगे, क्या लगेगा? यू विल नोटिस दैट यू रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ फोर्स टू पुश इट डाउन. व्हाई? Why do I need more force to push the mug inside the bucket of water? That is because the water is applying a force on the mug when I'm trying to push it down. There is an upward force on this particular mug, and you try to push the mug straight forward and not inverted. Straight forward, mug को अंदर डालने की कोशिश करो. If you leave it, the mug bounces back up. Why is that? Because there has been a force being applied by the water onto this mug, and that force, my dear students, is called as buoyant force. What is this force? The buoyant force. Now, if you have to define what is buoyant force, how will you define it? It's very, very simple. Buoyant force is the force with which any fluid pushes the object upward. So, buoyant force is an upward force provided by any fluid out there. ठीक है? That's a buoyant force. तो अब आर्किमिडीज ने बताया कि इस buoyant force को हम कैसे कैलकुलेट करो. आर्किमिडीज ने बताया कि इस बायंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करें, और उस प्रिंसिपल को हम कहने लगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डिड वी रिक्वायर दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल एट ऑल. बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ शिप्स, बोट्स, एवरीथिंग.
शिप इज मेड अप ऑफ मेटल. एक छोटा सा पिन अगर मैं पानी में डालूं, इट गोज डाउन. बट an entire ship made up of metal does not sink, it floats. Why? Because of this buoyant force. Archimedes thought, if I can find out exactly a relationship between the buoyant force and the object, I can make anything float. अगर buoyant force मेरे weight से ज्यादा हुआ तो मैं float करूंगा. अगर buoyant force मेरे weight से कम हुआ, then I'll go down. So Archimedes said, the upward buoyant force on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object. ठीक से समझाता हूं, पूरे ध्यान से देखना आपने. इसको बैठा रहा हूं बच्चों, पूरे ध्यान से देखो. यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. पूरे ध्यान से देखना यहाँ पे. सो इमेजिन इफ आई हैव अ शिप, आई होप दिस लुक्स लाइक अ शिप, ठीक है, एंड योर वाटर अराउंड इट. द बाइंड फोर्स FB is equal to the amount of water displaced by the ship. जब शिप पानी के अंदर जाता है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो इधर उधर निकले. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बकेट ऑफ वाटर है, अगेन अगर आप मग को अंदर डालोगे, देयर विल बी सम वाटर कमिंग आउटवर्ड, देयर विल बी सम वाटर स्पिलिंग आउट, क्योंकि आप इस मग को अंदर डाल रहे हो, तो मग थोड़ा स्पेस लेगा तो पानी बाहर आएगी. सिंपल. सेम वे ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब जाता है द वाटर को डिस्प्लेस करता है. तो आर्किमिडीज ये कहता है, आर्किमिडीज ट्राइंग टू टेल द सेम थिंग, द वेट ऑफ वाटर विच दिस इज ट्राइंग टू डिस्प्लेस इज इक्वल टू द बाइंड फोर्स. ये कह रहा है आर्किमिडीज. तो जितना ज्यादा मेरा शिप पानी को डिस्प्लेस करेगा, जितना ज्यादा एरिया वो लेगा, सिंपल सी बात, जितना ज्यादा मेरा शिप एरिया लेगा जो पानी को डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा वो बाइंड फोर्स होगा. इस वजह से आपका जो शिप होता है इतना बड़ा होता है, इतना सरफेस है उसका इतना ज्यादा होता है, ताकि वो फ्लोट कर पाए. ठीक है, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा वो फ्लोट करेगा. एक और एग्जांपल देख सकता हूं, एक और एग्जांपल सिंपल से देख सकता हूं आपको. अगर मैंने एक डिस्क उठाया, एक पतला सा सीडी डिस्क उठाया, सबको पता है सीडी का डिस्क क्या होता है ना, सीडी पता है सबको क्या होता है. अगर मैं एक पतला सा सीडी डिस्क उठाया, इफ आई पुट दिस इनसाइड द वाटर लाइक दैट, ऐसे कर मैंने डाल दिया तो पानी के अंदर चल जाएगा वो. लेकिन इफ आई टेक द सेम सीडी डिस्क एंड पुट इट लाइक दैट, अगर मैं उसको ऐसे डालूं तो वो फ्लोट करेगा. क्यों? आपका एरिया चेंज हो गया. इस मामले में सिर्फ इतना वो पानी डिस्प्लेस कर रहा था, तो बाइंड फोर्स कम था. लेकिन इस मामले में ये पूरा सीडी का जो सरफेस एरिया, उतना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो ज्यादा बाइंड फोर्स पे लग रही है और वो तैर पा रहा है. ठीक है, अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट विच यू गाइस कैन डेफिनेटली डू इट इन योर होम. कूल गाइस, सो आई होप ऑल यू गाइस अंडरस्टूड दिस. ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया गाइस. तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये था प्रेशर कॉन्सेप्ट, और फिर एट द एंड आया आपका डेंसिटी कॉन्सेप्ट विच इज मास बाय वॉल्यूम. मुझे पता है कि आपको सबको पता होगा डेंसिटी क्या होती है, तो सिंपल सी बात यार हो गया. So this was the entire chapter of gravitation guys, finished as fast as possible. I hope कि मैंने 30 minutes में कर दिया. I'm not sure about it, but anyways, thank you so much guys. You all have been lovely, absolutely great. So if in case you want to get the notes, what we have studied today, go on to the Vedantu app and definitely download the Vedantu app guys. And once you download the Vedantu app, create your profile. और प्रोफाइल में आप जाओगे तो प्रोफाइल जैसे क्रिएट हो जाती है आपकी, कोई भी नोट्स चाहिए आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, कोई भी जो नोट्स चाहिए यूट्यूब पे चल रहे हैं, सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, कर लेना. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव स्टार्टेड द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, एंड टेलीग्राम ग्रुप में देयर हैव बीन लॉट ऑफ हंगामा ऑलरेडी. तो यार ट्राई टू क्विकली ज्वाइन इट, एंड वहीं पे आपके नोट्स भी मिलेंगे. यू विल बी नोटिफाइड अबाउट ऑल द अदर सेशंस कमिंग इन. यू विल ऑल्सो बी you can ask your doubts also where other students will solve it, or we will ourselves will solve it. So please go ahead guys and join the Telegram group. The link is in the chat section below, comment section below. ठीक है. So guys, that's it. Thank you so much for today's session. It has been a lovely experience guys. I hope all of you guys also enjoyed this, right? I hope that all of you guys also enjoyed this guys. If in case you definitely enjoyed it, hit that like button and also share this video if you think everyone will be able to enjoy this video, and also subscribe to the channel for more and more amazing videos. Do not forget to press that bell icon. ठीक है. And also let me know in the comment section below guys कि कैसा, कितना मजा आया आपको, मजा आया कि नहीं, बताना बिल्कुल in the comment section below. I'll be waiting to hear you out from each and every one of you guys. I reply to each and every comments of the students. So guys, all the best for your midterm examination. I hope this video was completely helpful. Until I meet you guys next time, this is Abhishek signing off. We'll see you guys in the next session. Until then, enjoy your life. Bye bye. Take care.